Hello everyone, I am Dr. Reha Tyagi, and in this video we will be talking about the precautions one must take when he or she is going to the offices. Because now when the lockdown has been lifted up and workplaces are open and you are going to your office, so definitely everybody who's going to the office is at risk for developing COVID-19 because all the surfaces, all the areas, all the belongings of the office are shared by one and all. So here are the precautions and preparations one must do while going to office. The first thing, preparation. So what all you have to pack with you. First thing is your charger of your mobiles, of your laptops or your memory banks. Second thing is pack your lunch. जो भी आपको खाने में, breakfast में, anywhere, anytime you want to eat, उसको pack करिए. Pack all the cutlery items also, like the spoon, bowls or glasses, whatever you would be needing with your meal. Third thing, an essential thing, is your mask. Now, while you step out of your homes, first thing is that you need to take just one pair of shoes, just fix one pair of shoes to go into your office. And definitely wear them outside your house and remove them outside your house. Now, while you step out, you need to carry a pen with you in your front pocket and a handy sanitizer with you, which you will be needing at a lot of times. So जब आप ऑफिस में एंटर करते हैं, the first thing is your door. So avoid touching the door handles because they are touched by everybody. So आप door को अपने foot से खोलने की कोशिश करेंगे. Then when you step forward, the second thing is your lift. Definitely अगर आप स्टेयर से जा सकते हैं, अगर नीचे ही हैं फ्लोर्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सो आप ट्राई करिए कि आप स्टेयर्स का यूज करें. लेकिन अगर आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं, देन द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड अवॉइड क्राउडिंग इन लिफ्ट. कम से कम लोग एक बार लिफ्ट में जाएं. लिफ्ट में डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें जितना भी पॉसिबल हो. मास्क उस टाइम टाइटली आपके फेस पर होना चाहिए. एंड देन अनदर थिंग इज योर लिफ्ट बटन. लिफ्ट बटन, if there is any attendant, so better है कि आप उसे ही बोले उस बटन को प्रेस करने के लिए. And if nobody is there, then what you can do with your pen or pencil, you can just touch it, spray with the sanitizer and put it back in your pockets. So आपका sanitizer और pen आपकी front pocket में हो, जो कि handy रहे हमेशा. Then after stepping out of your lifts, you go to your desk. So first sanitize your desk. If you are having a desktop, अगर आपका वही सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो पहले सिस्टम को भी सैनिटाइज करिए, सरफेस को, टेबल टॉप को सैनिटाइज करिए और आपके ड्रॉर्स को सैनिटाइज करिए. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर बैग. आपका जो लंच बैग या फिर आपका लैपटॉप बैग है, उसको कहीं भी टच नहीं करना है, उसको कहीं भी रखना नहीं है. जस्ट स्ट्रेट अवे कैरी इट फ्रॉम योर व्हीकल टू योर ड्रॉर. Now when you have sanitized everything, you can sanitize your hands also and then start working. Now when you need to go to somebody for a talk or any discussion, so बहुत जरूरी है, जो कि हम usually करते थे, we just lean on the surface, on the table or on their cubicles and then we talk. So उस चीज को avoid करना है. Maintain a distance with the other person and have a conversation. Another thing is your lunch. While having meals, it is very essential that you maintain social distancing because उस टाइम पे आपको अपना मास्क रिमूव करना ही होगा. So उस टाइम डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जिस भी सरफेस पे आप खा रहे हैं, अगर आप अपने क्यूबिकल में ले रहे हैं और यू आर गोइंग टू द कैंटीन, उस सरफेस को भी सैनिटाइज या डिसइंफेक्ट करके ही अपने लंच स्टार्ट करिए. एंड डेफिनेटली whenever you are drinking anything, whenever you are eating anything, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली फॉर 20 seconds. उस टाइम हाथों को वॉश जरूर करें. While meeting or greeting people, avoid handshakes because definitely it can transfer the infection from one to another. And in case of females should tie their hair properly so that आपको बार बार अपने बालों पर हाथ ले जाना ना पड़े because hair can also be infected with the virus. Even your hair can carry the virus. Lastly, जब आप वहां से ऑफिस से स्टेप आउट कर रहे हैं, when you step out of your office, sanitize your hands, sanitize your bag, and then only touch your vehicle, then only touch the handles of your vehicles.
इट इज वेरी एसेंशियल कि आप ऑफिस का इन्फेक्शन अपने व्हीकल या फिर अपने घर पे ना ले आएं. सो स्टेप आउट करने के बाद इन बातों का ध्यान जरूर रखें. Then when you come back to your home, definitely remove your shoes outside. Straight away go to the bathroom and change your clothes. If it is possible, take a bath from head to toe. And if it is not possible, then at least wash the exposed body parts. I hope I am able to provide all the necessary information to you. And I request you all to practice these precautions because it is very necessary that while you are working, you don't carry the virus to you or to your family members and you maintain the safety of one and all.